This is absolutely mind-blowing. The entire world has been staring in absolute awe at images that have just been released from the James Webb Space Telescope, a $10 billion piece of equipment that traveled over 1.6 million kilometers to provide us with the sharpest and deepest glimpse into the cosmos, capturing light from over 13 billion years back into the history of our universe. And while there's been much admiration of the science and technology that has brought us these images, this is much more than just a photograph. As scientists are already pointing out themselves, this is a means towards further discovery and finding out answers to questions we still don't yet know. We see examples of structures that, honestly, we don't even know what they are. Like, what's going on here? And of all the questions that need to be answered, the most important question that needs to be addressed is from where did all this come from? You see, as incredibly beautiful and mesmerizing this entire universe is, it still requires an explanation. The universe is adorned with galaxies and stars that are continuously expanding, changing, being born, dying, coming into and out of existence. In other words, the entire universe is filled with dependent and contingent beings that all require an explanation. I mean, if this universe is 13.7 billion years old, then there clearly was a time when none of it existed. So where did it all originally come from? And who or what is sustaining all these dependent things in the universe? These are questions that need to be addressed, yet they are questions that are outside the scope of science and beyond the realm of that which is observable and empirical. And this is nothing against science, for there are many things that science can't explain. I mean, science can't explain consciousness, it can't explain from where the first cell come from, it can't give an answer for why there is life instead of no life, or why there is something as opposed to nothing. Yet the universe still requires an explanation, and that explanation can only be from an independent source. Something that doesn't change, something that doesn't die, something that doesn't come into and out of existence, something that all dependent things rely upon, something that doesn't require any further explanation because it is and always was an independent and eternal force, an everlasting creator. So while we can very well and rightfully so admire the science that brought us this image of this magnificent scene, let us not forget the one who gave us the scene to begin with, Allah. He is the one. And you can go ahead and dismiss my claims and criticize me for bringing religion or theology into this, but let us not forget that it was this religion, Islam, that brought us much of what we know about the stars today. 2/3 of the stars in the sky with names have Arab names, a homage to the golden age of Islam. The father of modern optics, Ibn al-Haytham, who made way for the invention of the technology used in modern astronomy, was a Muslim. These are Muslims who were inspired by and driven by this book that constantly told them again and again and again to ponder over the universe and look into the sky for signs. A famous American astronomer once said, in the words of the famous Carl Sagan, somewhere something incredible is waiting to be known. and I have no doubt in that statement. In the entire universe and the creation of the heavens and the earth, there are signs of something incredible waiting to be known. And He is Allah. All right, अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने के लिए एंड आई अगेन अपोलोजाइज बिकॉज हमारी क्लास कल होनी थी एंड हमारी क्लास कल नहीं हो सकी तो आज हो रही है। नाउ इफ यू कैन जस्ट पुट इन द चैट एवरीबॉडी जो अभी क्लास में हैं, अगर आप मुझे यस और नो बता सकें, कैन यू हेयर मी प्रॉपरली? ओह परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू आनिया एंड अब्दुल्ला। ठीक है, so if the host can please enable screen sharing, then I can share my screen also. Thank you, Kaval. Thank you.
So आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड यू सॉ अ लिटिल ग्लिम्स ऑफ दैट इन द प्रीवियस वीडियो. आज मैंने आपको एक बड़े मजे की चीज भी दिखानी है. सो इट्स इन माय हैंड राइट नाउ. ठीक है, तो ये क्या है इसको हम बाद में देखेंगे. सो नाउ आई एम ट्राइंग टू शेयर माय स्क्रीन. द बस अभी जैसे ये हो जाए तो फिर. अच्छा, वानिया कह रही हैं कि देयर फ्रेंड हैज दैट. ओके, योर फ्रेंड हैज दिस. ठीक है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, राइट. तो देखें, ये इस तरह हिलता है. इट हैज डिफरेंट कंपोनेंट्स. ठीक है, एंड इट हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग फ्लिप साइड. बट ये क्या चीज है, राइट. सो we'll try to answer that question. The host, please, if you can allow me to screen share. Oh, by the way, आपकी लास्ट टाइम की असेसमेंट थी, असाइनमेंट थी कि you had to work on अल्बेरूनी, राइट. तो अल्बेरूनी के ऊपर किस किस ने काम किया? कैन यू sort of raise your hands on Zoom? Raise your hand like this. Okay, वानिया एंड अब्दुल्ला. ठीक है, तो वानिया एंड अब्दुल्ला, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू. आप यू कैन लोअर योर हैंड नाउ. अगर आप माइक अनम्यूट करके यू हैव 30 seconds, उसमें आप मुझे बता सकें व्हाट डिड यू फाइंड आउट. Yeah, so I found out that Alberoni used trigonometry to calculate the radius of the Earth by using measurements of the dip from top of a hill, and he carried out his measurements at Nandana Fort in Bin Laden Khan, and it is actually now present-day Pakistan. दैट्स वेरी गुड. ओके, तो नंदना नंदना फोर्ट पाकिस्तान में एक जगह है. बट आपने यू ऑल्सो सेड समथिंग पिंड दादन खान. Yeah, it's तो in Nanda. Well, the fort is in that place. राइट. तो डू यू नो कि वो जगह कहाँ पे है? हम उस तक पहुंच सकते हैं किसी रोड से? I myself have not experienced like going there, but I think that we can, because if Al-Biruni went there, then of course then we can too. ठीक है. सो कभी आप मोटरवे से इस्लामाबाद आए हैं? Um, नो. yes. I think yes. Okay, so for anybody who has ever been to Islamabad मोटरवे से, तो जब पहाड़ आने शुरू होते हैं तो ऑन द राइट साइड ऑफ इट वहां पे नंदना फोर्ट है. ठीक है, तो मोटरवे से आप पहुंच सकते हैं वहां पे. इट्स 2 hour ड्राइव फ्रॉम लाहौर एंड a 2 hour ड्राइव फ्रॉम इस्लामाबाद ऑल्सो. ठीक है, Okay. that's a very good answer. Thank you for that. So I'm just waiting for the host to enable my screen sharing ताकि मैं आपके साथ आज की क्लास शुरू कर सकूं. तो if Aisha is listening in, Aisha, can you please allow me to share my screen? Okay, meanwhile, if anybody has any questions from the previous class, so please go ahead. We're still waiting for others to join in. Okay, वानिया, ठीक है, thank you. मैंने डाउनलोड कर लिया आपकी प्रेजेंटेशन and I'll be very happy to take a look and I'll be sharing my feedback also. Okay, now I can share my screen. So चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं. नाउ आज की जो क्लास है उसमें
हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोनॉमी के अंदर मैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोनॉमी की बात करूंगा, सो देयर इज अ डिफरेंस। बट हम थोड़ा सा देखेंगे कि लोगों ने ओवर टाइम क्या क्या चीजें सोची, किस तरह सोचा, हाउ डिड दे फिगर आउट कि अर्थ सूरज के गिर्द घूम रही है या सूरज अर्थ के गिर्द घूम रहा है, इज एनीथिंग इवन मूविंग एट ऑल, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स थे, कौन से एक्सपेरिमेंट्स थी। बट ज्यादातर आर फोकस विल बी ऑन पीपल। तो कौन से लोग थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इन क्रिएटिंग दैट नॉलेज जो आज हमारी किताबों में है, जो हमारे पास है, मोबाइल फोन्स में है, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड। सो यू कैन सी हेयर इन दिस वीडियो, ये कुछ पुराने लोग हैं, जैसे कि ये गैलीलियो साहब हैं, जिनका नाम आपने बहुत सुना होगा। तो उन्होंने अपने दौर में दे मेड ऑब्जर्वेशंस, और बहुत सारे लोगों को बड़ी सजाएं भी मिली थी, क्योंकि दे सेड के नहीं जमीन तो नहीं हिलती, सूरज हिलता है। फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं, सूरज नहीं हिलता, जमीन हिलती है। सो देयर वाज अ बिग डिबेट, एंड पीपल आल्सो क्रिएटेड स्ट्रक्चर्स लाइक यू कैन सी हेयर। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी मदद से पीपल वुड फिगर आउट सॉर्ट ऑफ कौन सा महीना आने वाला है, मैंने क्या अभी कौन से क्रॉप्स लगाने हैं, कौन से प्लांट्स उगाने हैं, ताकि लोग भूखे ना मरें और लोगों के पास खाना हो। अगर कौन से सीजन में फ्लड आता है तो वो बच जाए, उनकी बकरियां, उनकी गाय भैंस से बच जाएं। तो सूरज, रोशनी, सितारे, शैडोज, इन सब चीजों को लेकर हम शुरू हुए थे ऑन आवर जर्नी टुवर्ड्स finding more about the universe. What you see here is an example of a constellation. और जैसे ही रात होती है, आपको पता है कि आसमान में, well, अगर आप शहर में रहते हैं तो फिर तो नहीं, but if you know, okay, if you're in your village or somewhere, as soon as it's night, the sky is full of stars. So there was nothing else for people to do than to just, look up and आसमान को देखते देखते वो सो जाते थे। And then there were people like Dr. Hubble. ये Hubble हैं, Hubble the person that you are seeing on the screen. He discovered one of the biggest things about the universe, that the universe is expanding. ठीक है? So we'll just quickly go through this. Stone Age के दौर से जब आंख से देखते थे, वहां से शुरू हुआ। इजिप्शियंस ने सोचा कि जी कोई गॉड्स हैं, और सूरज को वो वर्शिप करते थे बहुत ज्यादा। चाइनीज एस्ट्रोनॉमर्स ने किताबें लिखी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन एस्ट्रोनॉमी। देन इट ट्रांसफॉर्म टू इंडियन एस्ट्रोनॉमी। इंडियंस ने बहुत सारी स्टोरीज बनाई जिनको मैथोलॉजीज कहते हैं। एंड देन देयर वाज दिस एरिया बिटवीन प्रेजेंट डे इराक, सॉर्ट ऑफ कह लें पाकिस्तान की लेफ्ट साइड पे, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ। दिस बिग एरिया वाज नोन एज मेसोपोटामिया. So you don't have to remember this, but Mesopotamia was the center of a lot of information जो कि आजकल हमारी बुक्स में मौजूद है, एस्ट्रोनॉमी की बुक्स में. So Mesopotamian astronomy played a big role. फिर जितनी भी आपकी कॉन्स्टलेशंस हैं वो इस दौर में पैदा हुई, ग्रीक दौर में. द फेमस कॉन्स्टलेशंस दैट यू सी नाउ, जो आपके फोन में भी लिखी हुई हैं, वो इन लोगों ने इस पे काम किया. द मायंस वर्कड ऑन क्रिएटिंग अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैलेंडर. इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर, इस्लामिक एस्ट्रोनॉमी में बहुत सारे सितारों के नाम रखे गए, बहुत सारे सितारों को कैटलॉग किया गया, उनको एक ऑर्डर्ड फॉर्म में पहली दफा कहीं पे लिखा गया. सो इस्लामिक एस्ट्रोनॉमर्स रियली प्लेड अ बिग रोल इन मैपिंग द नाइट स्काई, मैप करने में. एंड देन द एस्टेक्स, ये भी आप कह लें कि जहां पर मेक्सिको है अभी, करंट प्रेजेंट डे मेक्सिको, ये वो साइड है. तो Aztecs also played an important part in creating calendars. All of these people, all of these civilizations, they saw कि आसमान में cyclic patterns हैं, just like the ones you're seeing on the screen right now. So ये तो day, दिन जाता है, फिर रात आती है, फिर दिन आता है, फिर रात आती है. It's like a cycle. So day or night is a cycle. Can you also in the chat tell me कोई और cycle in the sky, in nature, that happens all the time? Cycle का मतलब है कि it never ends, it keeps on happening. ठीक है, जैसे ये day और night है.
Vanya asks, rain, barish. Interesting. Water cycle. Yes, water cycle. It doesn't have to be कि आपके लफ्ज के आगे cycle लिखा हो तो वही जवाब होएगा. It could be anything else. Think about stuff, and I would encourage everybody else on the Zoom call right now. If you can tell me just one other cycle जो आपके इर्द गिर्द होता है, maybe आपके अंदर भी होता है भाई. ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा साइकिल होता है? Waking and sleeping. Very well, very well. Huda, thank you. बिल्कुल ठीक है. Here's another cycle in nature. Seasons. ये देखें. You're looking at the same place, but through the course of a year. So nature is mostly cyclic. Okay, we are surrounded by cycles. And here's another cycle, the cycle of stars in the sky. Okay, and this is related to our, well, all of these three that I showed you are related to how astronomy evolved, how it grew. दिन से रात होती है, अच्छा चले उसका भी एक इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं जो उसको मेजर करेगा. सीजन्स चेंज होते हैं, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट? ठंड कब आनी है भाई, स्वेटर कब लेने हैं, सब्जी कब नहीं उगेगी, कब उगेगी. सीजन्स का भी साइकिल बनाते हैं. और फिर सर्टन स्टार्स रात के टाइम आते हैं, तो मेरे शायद अगर इफ आई एम ट्रैवलिंग तो मुझे उनसे रास्ता मिल सकता है. तो स्टार्स का भी कोई साइकिल हम ना इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं जो स्टार्स को ट्रैक करता है. दिस इज द ओल्डेस्ट एस्ट्रोनॉमी इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर एक स्काई मैप बना हुआ है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द नेब्रा sky disk. Nebra because of the place from where it was then dug out, जहां से ये मिली थी. इस पिक्चर के अंदर कैन यू आइडेंटिफाई कि ये क्या क्या चीजें बनी हुई हैं? You can also draw on the slide if you want, or maybe I can do that for you and then you can identify. चलें जी, I'm going to draw in with the yellow arrow. ये क्या चीज है? The big circle is the sun. Okay. Crescent. The like the crescent type shape is the moon. The small circles Okay. are the stars. ठीक है वानिया, वेरी गुड, आपने सही बताया, बट आई वुड वांट अदर पीपल टू जॉइन इन एज वेल. तो जैनब, हुदा, हाजरा, अगर आप लोग बता सकें कि ये इफ आई ड्रॉ समथिंग हियर, सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ सर्कल, और सर्कल के अंदर जो भी चीज होगी आपने बताना है कि वो क्या है. ओके, व्हाट्स दिस? ये कौन बताएगा? रिवर. ओके, ओके, एनी अदर गेसेस? Any other guesses? So some people are also commenting in the chat. ठीक है, stars and the moon. Okay, so this particular thing is a comet. A comet. Sky में आती है, इसको उर्दू में कहते हैं दुमदार तारा. So ये comet भी उन लोगों ने देखी होगी और उन्होंने वो भी बना दी. Okay, what's this? ये क्या है? Why are these dots clumped together? Just go ahead and guess. ठीक है, guess करें. Stars, galaxies, constellation. But remember, back then constellations were not discovered, so it has to do something with stars. Yeah, maybe a galaxy, but they didn't know कि galaxy क्या होती है, right? So आजकल, and this is important, आजकल रात को if you go out and look up, तो आपको 5 या 6 stars नजर आएंगे. कभी देखे होंगे आपने, जो इकट्ठे इकट्ठे होते हैं. It's usually in the winter season.
कभी देखे हैं किसी ने? Yes or no? Yes or no? ओके, नो, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो आजकल आप देख सकते हैं, सो शाम को जाएं बाहर, आई मीन जब रात होए तो बाहर जाएं और देखें आसमान में, अगर आपको 5-6 सितारे इकट्ठे से नजर आते हैं, दैट इज अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, एंड दीज पीपल न्यू दैट। तो ये उन्होंने वो क्लस्टर बनाया हुआ है, इनको सेवन सिस्टर्स भी कहते हैं इस क्लस्टर को, एंड इफ यू कैन सी यहाँ पे 7 स्टार्स हैं इस क्लस्टर के अंदर। ठीक है, सो बैक देन दे न्यू अबाउट दिस। सो दिस इज द नेब्रा स्काई डिस्क। और उसके बाद ये देखें जी, ये क्या आ गया है, जुबान निकली हुई है और नाक के अंदर से पता नहीं क्या ऐसे सोटी सी निकल रही है। दिस स्केरी थिंग इज अ कैलेंडर। इट्स द एज़टेक कैलेंडर। तो जो एज़टेक लोग होते थे, दे मेड दिस सर्कुलर कैलेंडर। इसके अंदर मंथ्स भी हैं, इसके अंदर डेज भी हैं, इसके अंदर ईयर्स भी हैं। सो दिस वियर्ड थिंग इज द एज़टेक कैलेंडर। बट वो कैलेंडर जिसकी बेस पे हमारा मॉडर्न कैलेंडर बना हुआ है, वो ये कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है। सो दिस इज द फेमस मायन कैलेंडर। तो माया एक सिविलाइजेशन का नाम था, और ये मायन कैलेंडर उन्होंने बनाया था। एंड व्हाट इज दिस? ये तो आपको पता होगा जी। मैं चैट में देख रहा हूं, इफ एनीबडी कैन आंसर दिस। सो व्हाट इज दिस? डज एनीबडी नो? क्विकली बताएं, क्विकली, हमने आगे चलना है, ठीक है। ओके, आई गेस नोबडी नोज, राइट? अभी तक मुझे किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया, तो चलें मैं आगे चलता हूं। दिस इज द स्टोन हेंज। ये पत्थरों का एक सर्कल था किसी जमाने में, अब इसके कुछ पार्ट्स रहते हैं। ये इंग्लैंड में है, अभी भी है, वहां पे लोग जाते हैं, उसको देखते हैं। तो एवरी ईयर, सर्टेन सर्टेन डेज ऑफ द ईयर, ये देखें, अगर ऊपर से देखें इसको, ये इसकी एक्चुअल इमेज है, तो कुछ पत्थर आप देख रहे हैं गिर गए हैं ओवर टाइम, बट ये हजारों साल पुराना है। और देखें शैडोज कैसे ये कास्ट करता है ऑन सर्टेन डेज ऑफ द ईयर। तो पीपल कैन फिगर आउट कि अगर शैडोज इस तरह हो जाएं या इस तरह हो जाएं, तो ये वो सीजन है, ये फलाना सीजन है, ये सर्दियां हैं, ये गर्मियां हैं। तो पीपल, ह्यूमंस, आपके एंसेस्टर्स, दे यूज्ड टू प्ले अराउंड विद दिस, दे यूज्ड टू क्रिएट दिस स्टफ, ताकि वो आसमान को देख सकें, सीजन्स मेजर कर सकें, टाइम मेजर कर सकें। नाउ आप, आपके दोस्त, आपके अम्मी अबू, मैं, मेरे दोस्त, मेरे अम्मी अबू, मिस आयशा, हर एक के साथ एक प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं आपसे वो प्रॉब्लम शेयर करने लगा हूं, ठीक है जी। इस पिक्चर में कुछ स्पेशल नजर आ रहा है? यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी। What I can see from this picture is the human fossils. Like if you see, there's this picture of a human that's bird. Yeah, I think ओके, I can see human faces in the वाओ। photo. तो डू यू नो ये कौन सी तस्वीर है? No, This is a picture taken from satellite of the surface of planet Mars. it is? Yes. And do you see a human face there? Yes. Yes. But उसी face को अगर आप different lighting angles, तो आपको ये नजर आता है। अब कहाँ गया human face? I can't see it. Okay, okay. ये क्या है? That's a heart. And this is again on Mars. ठीक है, तो Mars पे दिल होता है? I don't think Looks, so. it must have been where explorers went, where some astronauts went on Mars, and something might have happened that they then died, and their fossils were made on on the surface of Mars. But nobody has gone to Mars yet, my friend. And this particular thing that you're seeing, this heart is like kilometers across. तो किसी ने ऐसे क्रेयॉन से पकड़ के तो यार नहीं बनाया ना इसको। तो ये देखें, चले एक और चीज देखते हैं ना। दिस इज स्पेस में। डू यू सी एनी पर्टिकुलर शेप, एनी ऑब्जेक्ट हियर? Yeah, Yeah, I do. can see that. I see like a snake type thing up like that.
देखो कुछ इस तरह का लग रहा है। Yes. ओह, तो ये क्या चीज है? It's a seahorse. सी हॉर्स, वेरी गुड वेरी गुड। सो व्हाट यू सॉ अभी, आपने और बाकी सबने, and you thought immediately कि ओ ये फेस है, ओ ये घोड़ा है, ओ ये बकरी है, ओ ये बिल्ली है। दिस इज द प्रॉब्लम दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये हमारे ब्रेन्स के साथ एक प्रॉब्लम है। ह्यूमन ब्रेन्स tend to create patterns where really nothing exists. तो बादलों में कभी जानवर की शक्ल देखी है? No. मैंने देखी है। So I've seen elephants and cats and dogs in the sky, clouds में, yes, right? So that's called pareidolia. Pareidolia is this thing with our brains. It needs to create patterns for some reason. Um, and here is the best example of pareidolia. This is what astronomy ki history mein human brain has been doing. Look at these stars. You join the dots together. You think it looks like a scorpion. So this should be Scorpio, the constellation. Similarly, very famous आजकल winter की constellation है, ये नजर आती है आंख से. 3 stars in a line and this beautiful constellation. It looks like somebody holding a bow and arrow. It must be Orion. Orion. Exactly. Orion the hunter. तो पेरिडोलिया हमारे इसी प्रॉब्लम की वजह से, which you just demonstrated, कि आपके अंदर भी है. So we are all humans. इस चीज की वजह से आसमान में स्टार्स थे, तो we said कि oh, let's connect these dots to create shapes. So we created constellations. The constellations are really pareidolia of the stars. Now, constellation की वजह से we started finding our ways across the night sky. हमें समझ आ गई थी कि ओए, ये जो एक डॉगी सा बना हुआ है ना आसमान में, यहां से सूरज हमेशा निकलता है, तो फिर यहाँ पे ईस्ट होगा, मशरिक होगा। वो जो हाथी सा भालू बना हुआ है ना, वो भालू वाली साइड पे नहीं जाना, वहां पे जाओगे तो वहां तो समंदर ही समंदर है भाई, वहां नहीं जाना। So stars all of a sudden started to become our compass. Now, अब आप सोचें, for a second, for a minute, step into the shoes of वो लोग जो कि पहली पहली दफा देख रहे हैं, ठीक है? Constellations बड़ी अच्छी हैं जी, ठीक है, बड़ी यूजफुल है, ओके, लेकिन सूरज बहुत बड़ा है। सूरज तो कुछ लोग तो उसको वर्शिप तक करते थे, तो सूरज तो बहुत ही स्पेशल है। तो जिन कॉन्स्टलेशंस के अंदर से सूरज गुजरता हुआ नजर आता है अर्थ से, वो तो कॉन्स्टलेशन फिर बहुत ही स्पेशल होंगे, राइट? सूरज उनके अंदर से गुजर रहा है। वो थी 12, उनको हम कहते थे जोडियक। ये वो कॉन्स्टलेशंस हैं जिनके ऊपर आपने जब पूछा होगा कभी किसी अपने दोस्त से कि यार आपका स्टार क्या है, आपका हॉरोस्कोप क्या है, तो वो कहते हैं एक्वेरियस, स्पाइसेस, लियो। मैं तो वर्गो हूं जी, मैं तो लिब्रा हूं, मैं तो पाइसिस हूं। ये वो 12 कॉन्स्टलेशन हैं, 12 महीने हैं, और 12। ओके, मामा ऐसे मत करो, मैं अंडर नहीं कर। सो 12 जोडियक कॉन्स्टलेशंस हैं, और टोटल कॉन्स्टलेशंस कितनी हैं ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है? ये आपने फिगर आउट करना है, आसमान में टोटल कॉन्स्टलेशंस कितनी हैं। सो दैट इज अप टू यू टू टेल मी। सो देयरफॉर जहां पे हमें फायदा भी होता था, चीजें प्रैक्टिकल भी होती थी स्काई से रिलेटेड, कि फ्लड ने कब आना है, चावल कब लगाना है, गंदम कब लगानी है, वहां पे मिथोलॉजी भी थी, डर और खौफ भी था कि यार वो तो भाई कोई शेर आसमान में ऐसे बना हुआ है, कोई कोई एलिफेंट बना हुआ है। एंड चाइना में चाइनीज एस्ट्रोनॉमर्स व्हेन दे यूज्ड टू सी दिस, ये देखें कि चांद को क्या हो रहा है, कैन यू गेस कि क्या हो रहा है? Where we only see like some part of the moon, but the other is still there, but we think that's actually disappeared. बट वेट, ये देखें, ये क्या है? It's वो a blood moon. राइट, तो when does a blood moon occur? I don't know. When there's a lunar eclipse. जब लूनर एक्लिप्स, तो जब लूनर एक्लिप्स होती थी, चांद छुप जाता था, तो चाइनीज एस्ट्रोनॉमर्स कहते थे कि अ ड्रैगन मस्ट बी ईटिंग द मून,
ठीक है, तो लोग अजीब अजीब चीजें सोचते थे। तो लोगों ने कहा यार इससे तो बहुत स्टोरीज बन जाएंगी, कुछ थोड़ी सेंस बनाते हैं, मशीन्स बनाते हैं जिनसे हम मेजर कर सकें स्काई को। तो वन ऑफ दोज मशीन्स इज इन माय हैंड, एंड आई विल बी sort of sharing this full screen के ऊपर in a bit, but before that थोड़ी सी इसी मशीन की मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ। So ये देखेंगे, अभी आप स्क्रीन पे इसी को देख रहे हैं, ये ऐसे पड़ी हुई है स्क्रीन पे, और इसके इतने ज्यादा कंपोनेंट्स हैं कि ये अमेजिंग है। और किसी ने चैट में पहले इसका नाम बताया था, एब्सोल्युटली दिस इज कॉल्ड द एस्ट्रोलैब, या इसको उर्दू या अरबी में अस्तरलाब भी कहते हैं। दिस वाज फर्स्ट डेवलप्ड आज से ऑलमोस्ट 2150 years ago, ठीक है। सो दिस इज वे बिफोर यू नो पाकिस्तान या इस्लाम, या सो ये बहुत पहले की चीज है। सो द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट कि मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, इसके इसकी हिस्ट्री इज लिंक्ड विद यू, विद एवरीबडी हु इज लिसनिंग टू दिस कॉल राइट नाउ। इसकी हिस्ट्री इज लिंक्ड विद यू। व्हाई? हियर्स व्हाई। ये इस्लामिक एरा के अंदर सबसे ज्यादा रिफाइन किया गया था। द बेस्ट ones, these best ones were created during the Islamic era. So here's a question that I'd like you to answer. Which city was the most important center for the production of astrolabs? What do you think? कोई आपको लगता हो कि दुनिया में ऐसा शहर है जो एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो वो कौन सा था? I think it's Baghdad. बगदाद। Baghdad. Very good. Any other guesses? Baghdad. बगदाद को लॉक कर दे। Yes. Okay. Any other guesses? बस उसके बाद फिर मैं लॉक कर दूंगा। No guesses. ठीक है, तो जी आप जिन्होंने बगदाद कहा हाथ खड़ा करें। The fort, like Nandana Fort. Nandana Fort. Palestine, somebody said. Okay जी, हाथ खड़ा कर ली। यास्मीन also thinks के बगदाद है। मुझे भी लग रहा है कि बगदाद है। एंड वानिया एंड अब्दुल्ला, आप लोग क्या कह रहे हैं? I say it's Baghdad. बगदाद है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ये। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? Nobody was thinking Lahore, हैं? Okay. So Abdullah Wasi, you can lower your hand now. Lahore was the center for the greatest astrolabs that were ever made. ठीक है? Nobody knows this stuff. And here's the person, Master Al-Haddad. ये 16th सेंचुरी में थे, जब हुमायूं का दौर था, सो मुगल दौर था। और ये उनके पोते का, उनके बेटे के बेटे ने जो एस्ट्रोलैब्स बनाई थी, ये लाहौर म्यूजियम में पड़ी हुई हैं। ये वुड की हैं, और ये उनमें से एक ब्रास वाली है, लेकिन असल वाली ब्रास ये ऊपर नहीं पड़ी हुई, असल वाली तो शिकागो में पड़ी हुई है। तो आई मीन इट्स वियर्ड राइट, हमने बनाई लेकिन शिकागो में पड़ी हुई। तो ये वो एस्ट्रोलैब का मॉडल है जो ये आपके सामने पड़ा हुआ है। इसको लाहौरी एस्ट्रोलैब भी कहते हैं। एंड this device that is in my hand, and I'll stop the screenshot so that you can see me properly यहाँ पे. Let me also try to see if I can. Okay, so ये है एस्ट्रोलैब। इसके अंदर ये एजेस के ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं। These represent degrees of the sky, ठीक है, टोटल 360 डिग्रीज होते हैं। और ये बीच में जो पार्ट घूम रहा है, this weird लकड़ी वाली thing, this has the name of stars here. ठीक है, यहाँ पे जो ये पॉइंट्स बने हुए हैं, these are all names of stars. I don't know if you can pick out certain names. लेकिन यहाँ पे होगा let me see if I can. ये देखें, you can probably pick out some names if it's not upside down. तो खैर यहाँ पे ये जो पॉइंटी एंड्स हैं, ये स्टार्स के नेम्स हैं। और ये जो लाइन बनी हुई है, यहाँ पे कॉन्स्टलेशंस लिखी हुई है। इफ यू कैन रीड दिस, में भी आई थिंक ये कैंसर है, लियो, वर्गो, ठीक है।
and these are also names of stars. ये जो pointy ends हैं, और ये जो background में white के ऊपर black है, this is the sky. ये सारा ऊपर sky है, ये नीचे land है. So using this instrument, you can measure कल फलाना स्टार इतने बजे कहां पे होगा. You can figure out कि आपकी बर्थडे के ऊपर total duration of the day क्या था. Now, why do you want to know that? Because नमाजों के times इससे figure out होते थे. This predates the clock. तो कभी सोचा कि clock के अंदर clockwise direction क्यों होती है? Have you ever thought about it? कि सिर्फ 12 से 1 2 3 इस तरफ क्यों needle घूमती है? Because of this. इसको आप ऑपरेट करते हैं, जिस वे में ऑपरेट करते हैं उसको फिर कहा गया कि ये डायरेक्शन होनी चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो द एस्ट्रोलैब इज द मदर ऑफ ऑल क्लॉक्स. ठीक है, चलिए जी, एक सवाल भी है जैनब का कि व्हाट इज द ब्लैक लाइन. जैनब, इसके ऊपर तो वी कैन हैव अ सेपरेट वर्कशॉप, मे बी अ 2-day वर्कशॉप इन पर्सन इस्लामाबाद में कभी. आई वुड लव टू, ये इसको आप बनाएं खुद से तो बड़ा मजा आएगा. बट हियर्स द इंटरेस्टिंग पार्ट. अल-बिरूनी जो हैं, उन्होंने ये वाली बैक साइड इसकी इस्तेमाल की थी टू फिगर आउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ. तो इमेजिन करें ये कितनी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है, और he did that by using these two holes right here. If you can probably see these two holes, right? So उन्होंने ये किया था कि पहाड़ी के ऊपर चढ़ के इन दोनों होल्स के सेंटर में होराइजन को देखा था, और he measured the angles from here, and then he figured out यहाँ पे एक मैथमेटिक्स में चीज होती है, जब आप बड़े होंगे तो आप पढ़ेंगे उसको, साइन एंड कोसाइन. वहां से उन्होंने एंगल्स मेजर किए थे, and then he figured out the size of the earth. So amazing instrument. ठीक है, it's literally the sky in the palm of your hand, and that is the name, Astrolab. You have sky in your hand. Lobos is hand. So it's just amazing. It's just beautiful. फिर ये ओल्डेस्ट कंप्यूटर है. तो कंप्यूटर से मुराद है कि ये एक वो सिस्टम था जिसके अंदर आप ऐसे लीवर घुमाते थे भाई, और फिर घुमा घुमा के आसमान में यू कुड सी कि आज से 200 साल बाद एक्लिप्स इस दिन होगी, आज से 3 साल बाद सूरज यहाँ पे होगा. दिस वाज अ कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट जिसका सिर्फ एक फ्रैगमेंट हमारे पास रह गया, बाकी सारा तबाह हो गया. ठीक है, दिस वाज फाउंड अंडर वाटर in a shipwreck. So only this part remains. But we're not going to go into the details of this. इसको एंटीकाइथीरा कहते थे, और ये ग्रीक इंस्ट्रूमेंट है. बट अब हम मूव जल्दी से आगे चलते हैं. अब we're going to skip a lot of the instruments part here. So Greece में, and here is यहाँ पे we're going to start a competition. ठीक है, ग्रीस के अंदर एक जंग शुरू हो गई, एक इंटेलेक्चुअल जंग. People started to, इतनी चीजें बना ली थी, instruments and everything, कि they started to understand, now they wanted to find out कि अच्छा reality क्या है, truth क्या है, क्या जमीन सूरज के गिर्द घूमती है या नहीं, what is happening, why are we seeing things moving. So there was a battle between geocentric, यानी earth is in the center of the universe, या heliocentric, यानी sun is the center of the universe. तो कौन सी चीज सेंटर में है और कौन सी चीज उसके इर्द गिर्द घूम रही है. So this was because आजकल फुटबॉल सीजन है, तो this was a match. ठीक है, तो इसको हम एक मैच के तौर पे ट्रीट करेंगे. And let me show you कि ये मैच कैसा दिखता था. लो जी, अब आप ऊपर अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक्सक्यूज मी, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं जियोसेंट्रिक और हीलियोसेंट्रिक के पॉइंट्स. जो लोग आते जाएंगे हिस्ट्री के अंदर, वो या तो स्कोर करेंगे जियोसेंट्रिक के लिए या हीलियोसेंट्रिक के लिए, एंड विल सी के फाइनल स्कोर क्या था. दिस इज हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोनॉमी प्लेड थ्रू दिस स्कोर बोर्ड. एक्सक्यूज मी. ऑलराइट जी, इनको जानते हैं आप, प्लेटो. Yes.
यस, तो बड़ा अक्लमंद था प्लेटो, बड़ा सोचता था, ठीक है। प्लेटो और एरिस्टोटल, यस, दो लोग। सो इन दोनों का क्या व्यू था, ये लोग क्या सोचते थे, अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे। ये देखें, आपको आवाज आई इसकी, ठीक है। सो इन्होंने कहा कि नहीं जी, जमीन सेंटर में होनी चाहिए, तो सूरज जो है वो जमीन के गिर्द घूमता है। बिकॉज देखने से तो ऐसे ही लगता है ना कि सूरज डेली हमारे इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। सो द यूनिवर्स रिवॉल्व्स अराउंड अस। ये इतने अक्लमंद लोग थे, ठीक है, इनकी बेस पे बड़े बड़े सिस्टम चल रहे हैं दुनिया में, लेकिन ये इस पे कह रहे थे कि अर्थ सेंटर में है। तो ये इन्होंने पूरा मॉडल बनाया था। दिस लुक्स कॉम्प्लिकेटेड, आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस, लेकिन इफ आई जूम इन, ये सेंटर में अर्थ है ऊपर, ये आप देख सकते हैं जहां मेरा माउस है। और कहते थे कि पहले आते हैं क्लाउड्स बेटा, क्लाउड्स के बाद आता है लाइट, लाइट के बाद आता है सन एंड मून, फिर मरकरी, वीनस, अच्छा उसके बाद सूरज आता है। सो मून के बाद मरकरी आता है आसमान में, फिर वीनस आता है, फिर सूरज आता है, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, और ये फर्मामेंटो। फर्मामेंटो इज कॉल्ड हेवेंस, यानी सितारे। तो कहते थे ये इस तरह जमीन के गिर्द हर चीज ना सेटअप हुई भी है, और इसलिए भाईजान असी ते सेंटर ही हम सेंटर में हैं, हम बादशाह हैं। तो फिर अच्छा ये देखें जैनब क्या ड्रॉ कर रही है यहाँ पे। अच्छा, फिर ये एक साहब आए। अब ये कौन है? ये था एरिस्टार्कस। ये भी ग्रीक था, एक फिलोसोफर था, बड़ा अक्लमंद बंदा था। इसने कहा यार कुछ समथिंग इज नॉट राइट। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू से कि हीलियोसेंट्रिक होना चाहिए, सूरज को सेंटर में होना चाहिए, तब थिंग्स मेक सेंस। और इसको बड़ी पिटाई हुई इसकी। इसको लोगों ने कहा ओए तूने एरिस्टोटल के खिलाफ बात की है, पकड़ लो इसको। लेकिन फिर एरिस्टार्कस चुप हो गया था, लेकिन ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने रिकॉर्ड पे ये बात की थी। तो ही वाज सिंपली इग्नोर्ड। तो इसका पॉइंट हम वापस ले लेते हैं। ये पूरा हिस्ट्री में ना ये बेचारा खुआर ही हुआ, ये इग्नोर ही हुआ था। फिर ये साहब आए, सिलीसस, अजीब अजीब से नाम है भाई। इन्होंने भी कहा हीलियोसेंट्रिक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका काम किसी आग में जल के खराब खत्म हो गया था। इनका भी पॉइंट हम वापस ले लेते हैं। फिर ये देखें कोई बड़ा अक्लमंद बंदा आया है। इट्स इनका नाम है टॉलेमी। टॉलेमी एक वो साइंसदान थे जिन्होंने आसमान के अंदर स्टार्स की पोजीशंस बड़ी एक्यूरेटली मैप की थी। इन्होंने कहा कि भाई साहब ओह, इन्होंने कहा नहीं, ना अर्थ सेंटर में, ना सूरज सेंटर में, दोनों एक दूसरे के इर्द गिर्द सेंटर में ही घूम रहे हैं। यानी उसने दोनों बातें कर दी, क्योंकि टॉलेमी इतना फेमस था। टॉलेमी की बताई हुई बातों को 2000 ऑलमोस्ट 1500 साल तक माना गया था। इसको इसको अपोज नहीं किया गया था। तो ये जो मॉडल आप देख रहे हैं नीचे, जिसमें सेंटर में अर्थ है और उसके इर्द गिर्द मून है, और वो पीछे जो है वो सन है, तो ये सारा सिस्टम एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमता है। ये इसने जब बताया ना, तो लोगों ने कहा हैं, तो भाईजान आप क्या कह रहे हैं कि अर्थ सेंटर में है या सन सेंटर में है या क्या है? तो इन भाई साहब ने बड़ी अक्लमंदाना तरीके से बात की। उन्होंने इसको एपिसाइकल से कहते थे। ये है जी 1500 ईयर्स तक ये मॉडल सही कंसिडर हुआ, ठीक है। सो दिस मॉडल एक्सप्लेन्ड चांद के फेजेस। इट एक्सप्लेन्ड कि प्लैनेट्स आसमान में सर्टेन डेट्स पे ना जाके वापस आ जाते हैं, फिर दोबारा आगे जाते हैं, फिर वापस आते हैं। इस प्लैनेट्स डू दीज वियर्ड मूवमेंट्स। ये मॉडल उसको भी एक्सप्लेन कर देता था। सो टॉलेमी ने बेसिकली जियोसेंट्रिक ही कहा। ही सेड कि अर्थ वेल थोड़ा सा ऑफ है सेंटर से, लेकिन सेंटर में ही। फिर जनाब वो साहब आए जिनकी हमने शुरू में वीडियो देखी। चलिए इनका नाम मैं आपसे पूछता हूँ, किसको याद है? ये फेस जो है ये उस वीडियो में भी था, किसी को याद है? ये हैं अल हेजन या अल हसन, इब्न अल हैसम भी कहते थे इनको। तो अल हेजन अगर अभी हम इनको कहें,
तो इन्होंने कहा भाईजान टॉलमी साहब, जो 1500 साल से कोई बंदा टॉलमी को अपोज नहीं कर रहा था, इन्होंने कहा एक सेकंड रुक जाए टॉलमी भाईजान। इन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम था डाउट्स कंसर्निंग टॉलमी। 1500 ईयर्स बाद एक बंदा आता है अल-हिज़न और वो कहता है कि टॉलमी के ऊपर डाउट्स हैं मुझे, और उन्होंने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया उसके अंदर उन्होंने हीलियोसेंट्रिक को ही प्रेफर किया। फिर अल-बिरूनी आ गया। अल-बिरूनी ने एक्लिप्सेस के ऊपर बहुत काम किया था, मून की मूवमेंट पे, और मून की मूवमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू नो के द सन शुड बी इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, नॉट द अर्थ। फिर आया जी कोपर्निकस। ये आज से 400 साल, आज से 500 साल पुरानी बात है, तो अब हम बहुत मॉडर्न दौर में आ गए हैं। कोपर्निकस वाज द फर्स्ट सॉर्ट ऑफ आप कह लें मॉडर्न डे साइंटिस्ट जिन्होंने ये किताब लिखी ऑन द रेवोल्यूशंस ऑफ द हेवनली बॉडीज। और इन्होंने ये एक उसमें जुमला है जो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है कि सूरज जो है दैट शुड बी द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, तब चीजों की समझ आती है वरना समझ नहीं आती। एंड आज हम जो मॉडल यूज करते हैं वो ये है, और ये मॉडल है कोपर्निकस का मॉडल। ठीक है, सो वी कॉल द सोलर सिस्टम कोपर्निकन मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है जी, सो ये है कोपर्निकन मॉडल। इन्होंने कहा हीलियोसेंट्रिक और इनके पॉसिबल इन्फ्लुएंसेस ये दो मुस्लिम साइंटिस्ट्स थे। ठीक है, कोपर्निकस व्हेन यू लर्न अबाउट हिम यू विल रियलाइज कि ये एक बादशाह समझा जाता है साइंस की दुनिया में। तो इनके पॉसिबल दो इन्फ्लुएंसेस मैंने ये सामने लिखने हैं। हीलियोसेंट्रिक को एक और पॉइंट मिल गया। फिर गैलीलियो आया, गैलीलियो ने टेलीस्कोप से देखा, ये उसकी जवानी की तस्वीर है, फिर भी उसके बाल कम है यार, लेकिन इन्होंने टेलीस्कोप से पहली दफा देखा चांद को और वीनस के फेजेस को, एंड ही वाज लाइक भाई इट इज सो क्लियर कि सूरज सेंटर में है, हम उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। एंड ही इवन मेड स्केचेस ऑफ द स्पॉट्स ऑन द सन एंड फेजेस ऑफ प्लैनेट वीनस। तो वीनस भी चांद की तरह डिफरेंट फेजेस में नजर आता है। एंड ये उन्होंने जुपिटर के मून्स का भी स्केच बनाया था। तो ही सॉ द मून्स ऑफ जुपिटर थ्रू हिज टेलीस्कोप एवरी नाइट। तो ये वो जनवरी के महीना है और ऊपर डेट लिखी है 2nd, 3rd, 4th, 6th, 8th। तो गैलीलियो ने भी कहा हीलियोसेंट्रिक। अब 2 और 2 बराबर हो गया स्कोर। अब टाइको साहब आए, बड़े अमीर थे, आप तस्वीर में देख सकते हैं। ही वाज सॉर्ट ऑफ अ वेरी वेल्दी मैन, और इन्होंने ना पैसे इनके पास बहुत थे, इन्होंने टेलीस्कोप्स बनाए बड़े बड़े, उसके अंदर बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स ने काम भी किया, इन्होंने भी काम किया। और इन्होंने भी कहा कि जो मेरी डेटाबेस है उसके मुताबिक मुझे लगता है ये करेक्ट मॉडल है। अब इस मॉडल में मुझे आप लोग बताएं सेंटर में क्या चीज है, कुछ समझ आ रही है? I think in the center it's the sun. रियली? तो अगर आप वो सेंटर में ग्रे वाले बॉल के ऊपर फोकस करें तो सेंटर में तो वो है। Yeah. What ball are you talking about though? So this particular thing in the center, this gray bit, which is the earth That's basically. the earth. That's the earth. तो आप देख रहे हैं कि पूरा सूरज का सिस्टम इज the system is going around the sun, but the system itself including the sun is going around the earth in this model. What? It's a weird model. ये देखें, if you just remove this gray ball from your mind, if you remove earth from this model, then everything is going around the sun, right? Yes. Yes. But वो कहता है कि although other planets are going around the sun, लेकिन everything else is going around the earth. What? It is, yeah, it's a weird model because Tycho was so rich, he was so wealthy, इतनी अच्छी उसकी reputation थी। He created this model जिसको हम कहते हैं जियो हीलियोसेंट्रिक मॉडल, बेसिकली फजूल बात। और इसको हम जो बड़े हैं वो कहते हैं पॉलिटिकली करेक्ट मॉडल, यानी जो उसको लगता था ना कि यार मैं ऐसी बात ना करूं कि मेरी बेइज्जती हो, ये वो मॉडल है। तो दोनों पार्टीज खुश नहीं, कहती थी अच्छा यार पता नहीं आप जो भी कह रहे हैं ठीक ही कह रहे होंगे। सो इसको हम कोई नंबर नहीं देंगे क्योंकि इसने बीच वाली बात की। फिर केपलर आ गए, केपलर ने सीधी सीधी बात की कि जी हीलियोसेंट्रिक होना चाहिए। इनके लॉज की वजह से आज भी स्पेसक्राफ्ट जो आपने वीडियो में देखा, आर्टेमिस मिशन चांद पे जो जा रहा है, आज भी इनके बनाए हुए प्रिंसिपल्स और रूल्स के तहत हम चीजों को स्पेस में भेजते हैं। तो he was correct, he said heliocentric.
ये केपलर के कुछ लॉज हैं, बट वी डोंट वांट टू गो इनटू दैट। एंड देन ये कौन है भाई? ये हैं सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, इनको नाम लेने से पहले ही वहां पे हीलियोसेंट्रिक में मैंने एक स्कोर डाल दिया। सो न्यूटन जो है, इन्होंने तो कह लें सोलिडिफाई कर दिया ना। इन्होंने कहा ये ऐसे ऐसे काम करते हैं, ये ग्रेविटी है, ये प्लैनेट्स हैं, और देयरफॉर सूरज इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ये उनकी एक एक्सपेरिमेंट की वीडियो है दैट यू कैन इमेजिन। सो अगर एक कैनन बॉल्स फेंक रहा है, तो एट व्हाट स्पीड मस्ट द कैनन थ्रो अ बॉल अराउंड द अर्थ कि वो बॉल घूमता ही रहे और वापस आके ना लगे। तो अगर आप थोड़ा सा जोर से फेंकेंगे तो कैनन बॉल थोड़ा आगे गिरेगा, थोड़ा और जोर से फेंकेंगे तो थोड़ा और आगे गिरेगा। तो वो कौन सी स्पीड है? देयर मस्ट बी अ स्पीड जहां पे आप फेंकेंगे और वो चक्कर लगाता रहेगा, यूं काटता रहेगा। सो दिस वाज लाइक न्यूटन्स ब्रिलियंस कि वो इस तरह इमेजिन करते थे चीजों को, फिर वो मैथमेटिक्स उसकी इन्वेंट करते थे, and then he would figure out the reality of it. So final score हमारा है geocentric 2 and heliocentric 4. So heliocentric wins, and today we know astronomy में हमारे सारे मॉडल्स, हमारी सारी मोबाइल फोन की एप्लीकेशंस, हमारा टेलीस्कोप को ऑपरेट करने का तरीका, हमारा स्पेसक्राफ्ट को भेजने का तरीका, एवरीथिंग कंसिडर्स अ heliocentric model. सूरज is in the center of the solar system. This is how we arrived at the heliocentric model. But any class on the history of astronomy would not be complete without this man. So the greatest observational astronomer, observational astronomy कहते हैं जहां पर टेलीस्कोप इन्वॉल्व हो जाए। ये मिक्स हो गया नाम। This is Sir William Herschel. विलियम हर्शल, ये आप नोट कर लें, ही वाज द ग्रेटेस्ट ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमर जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी के अंदर अमेजिंग कंट्रीब्यूशंस दी। सो ये हर्शल साहब बैठे हुए अपने दफ्तर में, ये पीछे उनका बड़ा सा टेलीस्कोप है जो कंस्ट्रक्ट हो रहा था पेरिस में, और ये ही डिस्कवर्ड इंफ्रारेड। आपने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का नाम सुना होगा। So James Webb Space Telescope is the biggest space telescope that people have ever created. वो इंफ्रारेड में काम करता है। इंफ्रारेड इज हीट, जब आपको गर्मी लगती है बेसिकली इंफ्रारेड की वजह से लगती है। He discovered infrared. He discovered several moons of Jupiter and Saturn through his telescope. He built the largest telescope of his time. It was 40 feet long. ये जो मेरे पास टेलीस्कोप है ना, ये कितना है? हाफ मीटर, यानी ऑलमोस्ट कितना कहूं मैं इसको, 3 फुट इसका साइज है। इन्होंने बनाया 40 फुट। ठीक है, इट्स एज बिग एज अ 2-story house. He was the first one to coin the term asteroid. ठीक है, he observed 2500 new deep space objects. Deep space objects होते हैं जैसे गैलेक्सीज, स्टार क्लस्टर्स हैं। ये आप उनकी शक्ल भी देख लें, वो बुरा हाल हो गया ऑब्जर्व करते करते उनका। एंड he created the largest catalog of the night sky. He 50% से ज्यादा आसमान में ऑब्जेक्ट्स इनकी डिस्कवरी का नतीजा है। क्रेटर्स ऑन द मून, ऑन मार्स एंड सैटर्न का एक चांद है माइमस, उसके ऊपर क्रेटर्स इनके नाम पे हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई एक क्रेटर आपके नाम पे हो जाए ना, तो दैट इज कंसिडर्ड अ लाइफ टाइम अचीवमेंट। दिस गाय हैज 3 प्लेसेस जहां पे क्रेटर्स इनके नाम पे हैं। ही वॉज द फर्स्ट वन टू मैप हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। ये पीछे जो मैप आप देख रहे हैं अजीब सा लंबा सा, ये इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था कि हमारी गैलेक्सी कैसी दिखती है। एंड ही कैलकुलेटेड द टिल्ट ऑफ मार्स। ओ माय गॉड, ही ऑब्जर्व्ड सनस्पॉट्स फॉर ओवर 40 years। हम अपनी अगली क्लास में इंशाल्लाह सनस्पॉट्स को लाइव देखेंगे टेलीस्कोप से। ठीक है, आप लाइव व्यू देखेंगे सूरज के ऊपर स्पॉट्स की। इन्होंने 40 साल तक देखे, और बस फाइनली ही डिस्कवर्ड द प्लैनेट यूरेनस। ठीक है, आई मीन लुक एट दिस गाय, अमेजिंग। ठीक है, तो ही वाज द ग्रेटेस्ट ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमर। ये नाम याद रखें, हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। एंड फाइनली डॉक्टर एडविन हबल। डॉक्टर एडविन हबल अमेरिकी साइंसदान थे, ये 1930s में जिंदा थे, और इन्होंने ये जो एक अजीब सा पता नहीं मशीन सी बनी हुई है, यहां से इन्होंने फिगर आउट किया था
कि यूनिवर्स एक्चुअली एक्सपैंड कर रहा है. So no longer is the universe just steady and static. It is expanding, and as you know, okay, if you read the Quran, it also tells you that the universe is expanding. अब वो जिस भी सेंस में अल्लाह ताला ने बात की है, we don't know, but it's just beautiful to link those two together here. So ये एडविन हबल हैं और इनके नाम पे वो इतना फेमस हबल स्पेस टेलीस्कोप भी लॉन्च किया गया था स्पेस में. Now, finally, I would just like to, share a little glimpse with you here. ये जितना हमने अभी तक देखा है, ये उसका एक थोड़ा सा खुलासा है. इतने हजार साल पहले चाइनीज और बेबीलोनियन एस्ट्रोनॉमर्स ने आसमान को देख के सोचा सिर्फ कि ये क्या है. एक शख्स आया, एनेक्सीमैंडर. इन्होंने कहा आसमान में जो स्टार्स हैं ना, ये सुराख हैं. हेवन की लाइट यहाँ से आती है, तो जितना बड़ा सुराख होगा उतना ब्राइट हो जाएगा सितारा, जितना छोटा सुराख होगा उतना डिम हो जाएगा. फिर एरिस्टोटल आया, एराटोस्थेनीज आया. इन्होंने सबसे पहले दफा अर्थ का साइज का अंदाजा लगाया था. फिर टॉलमी का मैंने जिक्र किया. टॉलमी ने बड़ा काम किया, 1500 साल तक उसकी बातें मानी गई. अल्हेजन आए, उन्होंने कहा कि भाईजान नहीं, आपके बातें सही नहीं लग रही मुझे. फिर ये 4 डब्बे आप देखें, ये वो 4 नाम हैं जिन्होंने ओवर द कोर्स ऑफ 100 years, देयर इज ऑलमोस्ट 100 years बिटवीन दीज 4 नेम्स. इसके अंदर उन्होंने रेवोल्यूशनाइज कर दिया एस्ट्रोनॉमी को. कोई डाउट नहीं था अब कि जमीन सेंटर में या सूरज सेंटर में था. एंड नाउ ग्रेविटी पे काम हुआ, प्लैनेट्स की एक्सप्लोरेशन पे काम हुआ, मून की एक्सप्लोरेशन पे काम हुआ. फिर न्यूटन आए, उन्होंने ग्रेविटी को पक्का किया. विलियम हर्शल, जिनका नाम अभी आपने बार बार सुना है, वो आए, उन्होंने ऑब्जर्वेशन एस्ट्रोनॉमी को बहुत अच्छा किया. द फर्स्ट फीमेल साइंटिस्ट टू गेट अ पे चेक फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट जिन्होंने उसको पैसे दिए अब उनके काम पे, वो थी एनी जंप कैनन. इन्होंने स्टार्स को कैटेगराइज किया अकॉर्डिंग टू देयर ब्राइटनेस एंड अकॉर्डिंग टू देयर कलर. इन्होंने, दिस वन लेडी कैटेगराइज्ड more than 2.5 लाख सितारे. That's a lot. ठीक है, that's 250,000 stars खुद से. फिर हबल द मैन आए, जिन्होंने यूनिवर्स को एक्सपैंड कराने का हमें बताया. एंड देन आइंस्टाइन केम, he gave us the greatest theory in physics, the theory of relativity. और उसके बाद Ariel 1, this is the first spacecraft sent to space for scientific exploration. ठीक है, आपने सुना होगा कि पहली स्पेसक्राफ्ट स्पटनिक थी या कुछ ऐसा था, बट वो सिर्फ एक खाली बॉल था एक बस, कि जी हम स्पेस में जा सकते हैं. लेकिन एरियल 1 वाज द स्पेसक्राफ्ट जो साइंस के लिए गया था. याद रखें, जब से जमीन बनी है ना, हमेशा चीजें गिरी हैं ऊपर से नीचे, एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. बट एरियल 1 was the first time कि एक मेटल की चीज वापस ऊपर गई है. और किस लिए? नॉलेज के लिए. फिर अपोलो मिशंस आए, जब हम चांद पे पहुंच गए, इंसानों ने चांद पे पैर रखा. और फिर जब मैं 10 years का था, in the year 2000, तो the first exoplanet was discovered. This is a planet that is beyond the solar system. So no longer was the solar system the only place with planets. And today 5,000 exoplanets discover हो चुके हैं, which means कि आप जिस मर्जी स्टार को देखें आसमान में, उस स्टार के गिर्द एक छोटू सा प्लेनेट उसके गिर्द घूम रहा है. So there are so many worlds, there are so many possibilities. क्या लाइफ है, क्या लाइफ नहीं है, वो दुनिया कैसी होंगी, क्या वहां पे हवा है, ऑक्सीजन है, मैं जा सकता हूं. So we started off with Egyptians thinking about कि ये सब कुछ क्या है, to exoplanets. So that is just a little brief on the history of astronomy. Let me also reshare that. Sorry. Yes. So आखिर में ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, okay, I hope you can see this.
So this is my message to you, and हमारे क्लास का टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने लगा, लेकिन याद रखें यही वो सीन है जो भी आपने हिस्ट्री, जो मैंने टाइमलाइन आपको दिखाई है, यही वो सीन है चांद, सितारे और बादल, जो कि उन्होंने भी देखा था, अल्हेजन ने भी देखा, एनेक्सिमेंडर ने भी देखा, टॉलेमी ने भी देखा, और आप भी देख। बट माई क्वेश्चन इज कि व्हाट आर द डिस्कवरीज दैट यू आर गोइंग टू मेक इसी स्काई को यूज करके, ठीक है? सो द गुड थिंग अबाउट एस्ट्रोनॉमी एंड द यूनिवर्स इज कि जो आपका प्ले ग्राउंड है, जो आपकी लेबोरेटरी है, ये जो आपके सामने नजर आ रही है आपको, ये सबके लिए सेम है। इट्स फेयर फॉर एवरीबॉडी। इट्स अप टू यू कि आप फिजिक्स या मैथ या साइंस को कितना शौक से पढ़ते हैं, ताकि आप अगली डिस्कवरी कर सकें एस्ट्रोनॉमी के अंदर, ठीक है? सो थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, वी हैव अ मिनट आई गेस, तो वी कैन डेफिनेटली एड्रेस दोस क्वेश्चंस। सो How? पहले कमेंट मैं उसको एड्रेस कर लूं। आई एम सॉरी वानिया, मैं बस एक ही क्वेश्चन एड्रेस कर लूं। रहमान पूछ रहे हैं कि कैन दीज वीडियोस बी शेयर्ड इन द ग्रुप प्लीज? आई डोंट नो व्हिच ग्रुप यू टॉकिंग अबाउट, मे बी आप लोगों का कोई व्हाट्सएप ग्रुप है। I can Yes. share the entire presentation with you, ठीक है? तो मैं मिस Okay, आयशा से शेयर कर दूंगा। I'll save on Drive. जी ठीक है मिस आयशा, बट मेरे पास ना ये प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट फॉर्मेट में अभी अपलोड नहीं हुई हुई। एज सून एज इट गेट्स अपलोडेड, मैं आपसे वो लिंक शेयर करूंगा। Okay, thank you. नो प्रॉब्लम। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था शुरू में, हाउ मेनी कॉन्स्टलेशंस आर देयर इन द नाइट स्काई? टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टलेशंस। तो कोई बताना चाहता है जाने से पहले? यू वेलकम रहमान, ठीक है। चलें जी, मेरा ख्याल है अभी अभी एवरीबॉडी इज फिगरिंग आउट क्या कितने कॉन्स्टलेशंस हैं। ओके ग्रेट। सो चलें जी, अगर कोई और सवाल नहीं है तो फिर हम इसको खत्म करते हैं। अगर हैं तो प्लीज आप पूछ लीजिए। First thing, how can you tell by the stars where you have to go? Good, that's a great question. So we'll be talking about that in the next class. Really? ठीक है? Yeah. So the hint is Polaris. ये मैं यहाँ लिख देता हूँ. You can look it up. Polaris. That's your hint. और अगली क्लास तक फिर आप इस हिंट पे काम करें, and I'll be asking questions. I'll be asking you कि किस तरह navigate करना है. And hopefully, again, remember, we'll be doing a live observation of the sun as well. ठीक है. चलें जी. All right. Thank you, everybody. बहुत शुक्रिया, and please take care. Until next time. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Office. Office.